नहीं नहीं, घूसा मेरे आंख में नहीं लगा, मामला थोड़ा टेंस है। क्यों? बिकॉज 8 डाउन 2 टू गो, रेडी फॉर नॉकआउट। आप सब देख के कह रहे होंगे कि लड़का बात क्या कर रहा है, कहना क्या चाह रहा है। अरे रुकिए तो सही, थमिए तो सही, बैठिए तो सही, अभी आपको बताते हैं कि अभी तक का हाल क्या है। So basically, Asna has given us 8 knockout punches. But now the final 2 rounds to go to 10 lakh rupees. But that can also be the final round. Final round? पर डायमंड टियर में तो 2 क्वेश्चन है। अरे बताते हैं, सब बताते, थोड़ा आराम से करेंगे आज, आराम से। पहले असना से पूछें कि have you registered the fact that you went through 8 questions, you're at 2,56,000 rupees without using a single assist? I can't believe it. अरे बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने करी है। 8 सवालों के सही जवाब दिए हैं, 2,56,000 रुपए पे ही हैं। She has cleared the silver tier and the gold tier without using a single assist. Now you may be asking, why do I keep saying without using a single assist? Because as I've been telling you in previous episodes, you have been paying attention ना, बना रहे थे ना नोट्स। अरे आप सब बड़े पढ़ाकू हैं, तो फिर भी बता देता हूं कि अगर आप असिस्ट ना यूज करें तो डायमंड टियर में आपके पास लास्ट लेग पे, फाइनल स्ट्रेच पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज आता है। क्या है वो एडवांटेज? वेल, इट इज कॉल्ड, ड्रम रोल, द ऑल और नथिंग गैम्बिट। Asna, good reaction there, right? 0 और 10,24,000। अब आप कहेंगी कि अरे मियां ये वाला ऑप्शन हम क्यों लेंगे? ये भी आपको बताते हैं। आपके पास कितने सवाल बाकी हैं डायमंड टियर में? 2। अब अगर मैं 2 को 1 कर दूं to get the grand prize, तो would you be interested in hearing the proposition? Yes. Continue. Now she's like, yes, tell us more. What is the fine print? Well, I tell you, there is no fine print. There is no catch. The thing is that instead of 2 questions, if you decide to play the all or nothing gambit, I will only ask you 1 question. यानी कि आप 2.5 लाख से 10 लाख पे पहुंच सकती हैं. Straight jump over from 2.5 to 10, from 2,56,000 to 10,24,000 with just the 1 question. I will also allow you to play all the 3 assists that you have saved up for that 1 question. The problem is, after playing these assists, you can't quit the game. You will have to give an answer. The correct answer will take you straight to 10,24,000 rupees. The wrong answer will take you down to 0. All or nothing. The advantage, of course, and that's a big advantage, is that instead of asking 2 questions, I will only ask 1 question. You only have to answer 1 question to get to the grand prize to become the You versus YouTube champion. खीर में आधी चम्मच शक्कर और डाल देता हूं मैं कि आप डिसाइड करेंगी कि सब्जेक्ट क्या है. You have 2 creators left in the diamond tier. You will decide who will be asking you that one all or nothing question. Let's meet your creators who are waiting for you there in the diamond tier. You have Nidhi with health and Roshni with science. Oh, this is amazing because Asna is a doctor. एक तरफ science, एक तरफ health. It's a good pick for you. You can choose which question that would be if you play the all or nothing gambit. तो अब Asna, मैं आपको थोड़ा समय देता हूं सोचने के लिए. It's a big call. Of course, this is your choice. अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल गेम भी खेल सकती हैं. आप कह सकती हैं कि मुझे 9th question और 10th question ही खेलना है. The same rules that have applied for the game so far, वही rules यहाँ भी apply होंगे. Right? Correct answer देने पे पैसा double to 5,12,000 and then to 10,24. गलत आंसर देने में पैसा half. And of course, after asking the question, you can choose to quit with the money that you have and all your assists are available. Right? तो आप इसके बारे में सोचिए. मैं तब तक प्लेयर पूल में 2 नए जो प्लेयर्स आए हैं उनसे परिचय कराता हूं आप सबका.
चंद्रकांत और प्रणीत ऑलरेडी हैं हमारे पास पिछले शो से. हेलो हेलो, हाउ आर यू? हमारे जो नए प्लेयर्स हैं उनसे मिलते हैं. अश्विन हमारे पास. Hey Gaurav, हाय अश्विन, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आप चंडीगढ़ से हैं Yes, और अभी आप चंडीगढ़ में ही हैं. yes. I'm staying with my parents, working from home. ओके, आप काम क्या करते हैं? So I work with the management consulting firm. I've just started last year. Hmm. I'm in the finance division. अच्छा, तो कंसल्टेंट हैं आप. Yes. तो मतलब कुछ काम नहीं करते. I tell companies what they already know. हाँ, तो आप दूसरों से काम करवाते हैं. करवाते हैं. I think dream. I keep teasing my friends who are consultants. I say, so basically you go into people's offices who are already doing their jobs and then tell them how to do their jobs even though they are still doing their jobs. Yes. गणेश, ये बढ़िया नौकरी है ना. दूसरों को बताओ क्या कैसे काम करें, खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है. Absolutely. In fact, consultants के बारे में मुझे exact saying याद नहीं, लेकिन कुछ तो एक एग्जाम्पल मैंने सुना था कि दे आस्क यू कि ये घड़ी चल नहीं रही है, आप बता सकते हो कैसे चलाए. वो बताते हैं हाँ घड़ी ऐसे चलती है, एंड फिर जाते जाते घड़ी ले जाते हैं तुम्हारी. So they just fleece you. So that's something I've heard about consultants. Not sure if it's true. That's something they say about bankers as well, right? There's something about bankers and umbrellas, right? Bankers are the ones who give you umbrellas and take it back when it rains. Yes, absolutely. ऐसा कुछ सुना है हमने. We also have Anushka with us. You're a student of law. Is that correct? Haven't been able to hear. Just a second. That's always lawyers can only hear after the fee is transferred. अच्छा कर रही हैं आप. ऐसे ही होता है. That's good. You don't need to be a student anymore. I think you've learned everything. So tell me, where are you from? Where are you based right now? I'm from Bhopal. My schooling is from Bhopal. I'm pursuing law from Symbiosis Pune in the final year now. Final year. Oh, excellent. So are you going to be a criminal lawyer? Are you going to be a contract lawyer? Are you going to be a IP lawyer? Are you khatam ho gaye? Bata do. Aur nahi aanta main. That's an interesting question. Actually, I'm inclined towards judiciary. So I've been planning to give the civil judge exam. Oh, आप judge बनेंगी? Inshallah. बहुत बढ़िया. So let me introduce you to Sucharita because she's the most judgmental person we have over here. Correct? It's true. Yeah, I'm not even denying it. And by the way, I just want to tell you, Sucharita, Anushka is actually a big fan of yours. Not of your being judgmental. She's a big fan of yours in general. Thanks. That's very kind of you to share, Gaurav. And thanks, Anushka. Thank you. I'm actually very happy to share the screen with you. I mean, it's an honor totally. If I'll tell this to my friends because they've been commenting on your YouTube videos and probably have received 1 or 2 replies also. They would not believe this. They will not believe that I actually had a conversation with you. How kind. How sweet. Very nice. मैं पढ़ती सब हूँ. Reply मैं कभी करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ. But I spend a decent amount of my day reading comments on YouTube. A lot. Too much. That's interesting. I want to ask, actually, let's do a show of hands. How many of the YouTube creators here actually read the comments? Pehle, show of hands. How many of you read comments? Excellent. Chaliye, after giving you all these lovely visuals, these beautiful visuals, let's turn the pressure up a little bit. क्या आप safely करना चाहेंगी 9 और 10 या 1? सिर्फ 1 question. प्यार किया तो डरना क्या? नहीं प्यार किया तो डरना क्या. नहीं. I'll go for 9 and 10. Please, I'll play safe. तो फिर चलिए आसना शुरू करते हैं. We shall begin your diamond tier on you versus YouTube. Question number 9 for 5,12,000 rupees. You will choose who is asking you this question. I will go with health and wellness. बढ़िया. तो निधि आप पूछेंगी सवाल 5,12,000 रुपए का. Question number 9. So Dr. Asna, first of all, congratulations for first making this far, and I think you by far इतना अच्छा कोई नहीं खेला है जितना अच्छा आप खेले हो. शुरू में आपने बोला था पोस्टपार्टम मुझसे कोई लीनियंट क्वेश्चन पूछना, पर मुझे लगता है जितना ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ है वो सारा ग्रे मैटर को डबल ही कर दिया है, राइट? So I think that was actually your superpower. तो फिटनेस के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में कुछ
अगर आप नॉलेज रखते हैं कुछ, is there something that interests you? I used to do aerobics, but then after शादी, after बच्चे अभी रुका हुआ है. Now postpartum 3 months I'll start again. Okay, great. तो फिटनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, जिसमें मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, फोटो आएगी आपके सामने, उस फोटो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी. सो लेट्स सी द पिक्चर फर्स्ट. अगर आपने फोटो देख लिया ध्यान से तो आई शैल आस्क द क्वेश्चन. Okay, so my question is, who founded this form of exercise? आपके options हैं A. Greg Glassman, B. Pavel Tsatsouline, C. Randy Hattrick और D. Kenneth Cooper. Exercise का नाम ही मालूम हो गया तो it's great. अब who founded this form of exercises? असना आपके पास तीनों असिस्ट अवेलेबल हैं. Of course, you can ask the player pool. फिर एक और है share a clue. The third pick is change the question, which as you understand, निधि एक और क्वेश्चन पूछेंगे आपसे. I think I'll take an assist. कौन सा लेना चाहेंगे आप? सवाल बदलना है, क्लू चाहिए, प्लेयर पूल से पूछना है, क्या करना चाहेंगे? I would go with change the question. So Asna has decided that she wants to change the question. अगर आपने guess करना होता, जिससे पहले हम इस सवाल को स्क्रीन से हटा दें, अगर आपने guess करना होता तो क्या guess करती? पहले निधि ये तो बता दीजिए एक्सरसाइज है क्या? It's basically called TRX. It's a suspension training. DRX. Same people. So can you guess doing one? it. Random answer. I'll go with B. That's my random guess. I have no clue about these people. So अगर आप B choose करते तो वो गलत होता. Pavel Tsatsouline is the person who introduced kettlebell. So he is not the right person. The right answer was C. Randy Hattrick. The TRX system, also known as total resistance exercise, refers to a specialized suspension training that utilizes equipment that was developed by a former Navy SEAL, Randy Hattrick. The other options, Greg Glassman is the founder of CrossFit, Pavel Tsatsouline is known for popularizing kettlebell, and Kenneth Cooper is known for popularizing aerobics. Well, anyway, it is not Pavel, but Asna threw in the towel, and now we have to change her question. So here it comes. Question number 9 once again for 5,12,000 rupees after playing the assist, which is change the question. Nidhi, over to you. Okay. So, Asna, the next question is coming from the world of yoga. There are so many types of yogasanas और ये हमारे सिस्टम के अलग-अलग प्रोसेसेस को स्ट्रेंथन करता है. तो मेरा सवाल आपसे किसी योगासना के बारे में है. आपको अगेन एक इमेज दिखाई देगी, उस इमेज को देखकर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी. ध्यान से देखिएगा, इमेज आ रही है आपके सामने अब. ओके, अगर आपने ध्यान से देख लिया है तो वी कैन प्रोसीड टू क्वेश्चन. Your question is, what is the name of this yogasana? Your options are A. Sayanasana, B. Tarakshvasana, C. Galavasana or D. Mayurasana. आपके पास 2 असिस्ट बाकी हैं. रिमेंबर दैट यू कैन प्ले ऑल 3 असिस्ट ऑन 1 क्वेश्चन ऑल्सो. इसमें कोई रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है. आपके पास 3 असिस्ट हैं स्टीयर के लिए. यू कैन चूज टू प्ले देम व्हेनेवर यू वांट. यू ऑलरेडी प्लेड 1 व्हिच इज चेंज द क्वेश्चन. ये नया सवाल है. क्या सोच रही हैं? So, one thing I know is there's a लेटने का आसना, that is something Mayurasana, that's लेट के करते कुछ. I'll go with an assist. I'm not sure. 2 हैं आपके पास अवेलेबल. उनमें से कौन सा? शेयर अ क्लू या आस्क प्लेयर पूल? I'll go with ask player pool. तो आपने आस्क प्लेयर पूल. इसमें हम देखेंगे कि अनुष्का, अश्विन, प्रणीत और चंद्रकांत ने क्या जवाब दिया है इस सवाल के. It is divided. The house is divided. Ashwin and Anushka, the new players, say it's
Taraksvasana. There is Pranit who's saying Galavasana, and Chandrakant is saying Mayurasana. Not D. I'll not go with D. Tarakwasana and Galavasana are the playful answers. Of the blood was going down near her head and her neck. Must be Galavasana if you try to break it. Could be Galavasana. Taraksvasana. Few of them answered Tarak. तुक्का था क्या? आप किससे बात कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा. किससे बात कर रही है? नहीं, प्लेयर पूल से पूछ रही हूँ मैं कि तुक्का मारे क्या? ऐसा नहीं, वो तो नहीं बताएंगे आपको कि तुक्का मारे या नहीं. ट्राई अच्छा था आपका, थोड़ा सा इधर. मैं उसके पेपर में नहीं देख रही थी, मैं बस देख रही थी उसके पेन में इंक बचा है कि नहीं. I am broken between B and C. But picture के हिसाब से the thing is yoga के poses are like the way they sit and you can break the word Sanskrit word. तो मुझे गला वासना फीलिंग आ रही है, गला वासना हो सकता है. It's for a noble cause. जी हाँ, आप जो भी पैसे आज यहाँ पर जीतेंगी, we will be matching that donation, giving it to Give India, who is battling for COVID relief effort in our country. I will go with the assist. I don't want to take any risk. Share a clue, please. Okay, so last assist उनका है. Share a clue. This is question number 9. She's using her third assist of this question. And Nidhi, she has asked for share a clue. तो आप एक clue देंगी जिससे hopefully ये question simplify हो जाए. So आपका clue ये है कि this asana is named after the son of Vishwamitra. Vishwamitra. If I play and I give it a wrong answer, I'll get 1 lakh, right? 1,28,000, yes. If you get it wrong, if you get it right, you go to 5,12,000. Or of course, you can quit with 2,56,000 rupees. Because now the only option you have is either you quit or you give an answer क्योंकि आपके तीनों assist use हो चुके हैं. Mayur Vishwamitra. Mayur sounds like a name. The Vasana. Should I go with C? Should I go with B? I think I'll quit the show. Is this your final decision, Asna? Yes, I think I'll quit the show. Okay, तो Asna बहुत अच्छा खेली अभी तक, but of course the diamond tier is a completely different kettle of fish. Question 9 and 10 of course सबसे मुश्किल होते हैं You versus YouTube में, और ये वाला काफी मुश्किल रहा है. उन्होंने अपने तीनों असिस्ट खेल लिए हैं, पर अब डिसाइड किया है that instead of risking it, she would walk away with 2,56,000 rupees. So, Asna, first of all, I would like to congratulate you for playing so well, and of course, we'd give you a big round of applause before you leave the game. So, well done, really, honestly, well done. और अब अगर आपको गेस करना होता, एक बारी जरा देखते हैं इसमें, अगर आपने गेस करना होता तो आप क्या गेस करती? I would go with Galavasana. गलावासना. उनके बेटे का नाम गला था? गलाव? मुझे तो लग रहा है मयूर होगा ना? मयूर नहीं होना चाहिए. मयूर sounds most like the name. Could be Tarak also. Could Tarak Mehta. Maybe Tarak Mehta was his son. I don't know. Anyone? ये क्रिएटर से तो पूछूंगा ही नहीं क्योंकि ये तो नॉन कमिटल है. जवाब ही नहीं देता कोई. सिर्फ तानी और अरुण है मेरे अच्छे बच्चे क्लास में. तानी और अरुण बताओ. What is the answer? मुझे लगता है it's मयूरासन. Yeah. Mayur नहीं होगा because Mayur I think is very flat.
Correct. I'm not. Exactly. Yeah. I'm not certain what it is, but I'm pretty sure it's not Mayur because Mayur आसन में ऐसे आप हाथ पे फ्लैट होते हो ऐसे. मैंने बहुत फाइट मारी वो आसन करने की, होता नहीं मुझसे. It's quite tough. अच्छा, बात बताओ, आप में से किसको शव आसन किसका फेवरेट आसन है योगा में? कितना मजा आता है. All yoga works basically towards when your yoga teacher will say, अच्छा now go into shavasana. Oh, thank you. कितना मजा आया. Okay, तो आप कह रही हैं गलावासना. निधि, यहाँ पर हमारे प्लेयर्स ने भी काफी जवाब दिए थे. किसी ने बोला था गलावासना? रणीत ने बोला था. आप चारों में से योगा कोई करता है? Does anyone practice yoga regularly? नहीं? ये अभी सबके तुक्के हैं. चलो फिर अब तो निधि जी से ही पूछते हैं. निधि मैम बताइए आप कि क्या है सही जवाब? पहली बात तो असना यू प्लेड सो वेल एंड वेरी अनफॉर्चुनेट कि सारे असिस्ट यूज करने के बाद भी डिडंट वर्क आउट. आपको कंफ्यूजन था सी और बी में. सबने बता दिया मयूरासन कैसा होता है. वो हैंड बैलेंस है, बॉडी स्ट्रेट रहती है, डेफिनेटली वो नहीं था आंसर. Sayan asana is actually a stand on your chin, like your elbows. So that was also not the answer. B actually is handstand scorpion. So answer actually C ही था. And you did guess it right. And I was kind of like, I hope she says it. But then आप player pool के answers देखने के बाद I think आप ज़्यादा confused हो गए. And as the clue said, गलव विश्वामित्र के बेटे का नाम था, उनके नाम पर दिया. और इसका फुल नेम जो है संस्कृत नेम दैट इज एक पदा गलवासना, विच इज एक्चुअली अगर आप उसको ब्रेक डाउन करोगे तो एक संस्कृत में मतलब वन, पदा मीन्स लेग एंड गलव इज द नेम ऑफ द सेज आफ्टर विच इट्स नेम्ड. इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम फ्लाइंग पिजन पोज भी बोलते हैं. ओह माय गॉड. जैसे भी वो कहते हैं ना कि जो भी रास्ता लीजिए बस मंजिल पे पहुंच जाइए. तो रास्ता शायद ऊबड़ खाबड़ था या शायद गलत भी था, पर आप पहुंच रही थी डेस्टिनेशन पे. बट लिसन, आई मीन hindsight is 2020, right? It's easy to guess when there are no stakes. I guess it was difficult for you to guess at that time when the stakes were so high. आप 2.5 लाख से 5 पे जा सकती थी और 1.25 लाख पे भी आ सकती थी. तो आपने कॉल लिया कि आप क्विट करेंगी 2.5 लाख लेके. So congratulations to you. You won 2,56,000 rupees. You're taking that home with you. Because you won that, we will be donating the exact same amount to Give India. So you have also done that today. So I respect you. You really won our hearts. I have to tell you that. Your smile has won our hearts. We've all been rooting for you. We've all been cheering for you. And we want you to be smiling as you leave the show as well. So please, जरा वो अपनी 200 वॉट की मुस्कुराहट दिखाई दीजिए. बिल्कुल, बिल्कुल. तो बहुत बढ़िया. Big round of applause for Asna, everybody. Super stuff. Well done. Thank you so much for playing You versus YouTube. Thank you. तो अब हमें एक नया चैलेंजर ढूंढना है. जी हाँ, और नहीं ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो चैलेंजर आते हैं लीडर बोर्ड से. एक ही सवाल पूछा गया अभी तक शो में और एक ही प्राणी ने सही जवाब दिया उसका. तो आइए देखते हैं कि कौन है हमारे अगले चैलेंजर ऑन यू वर्सेस यूट्यूब. प्रणीत, वेल डन माय फ्रेंड, वेल डन. बिल्कुल, जब दाढ़ी ना हो तो इनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता. यू सी, इसीलिए जीतना ही था इन्होंने. बहुत बढ़िया प्रणीत. हाउ डू यू फील? दैट्स प्रोबब्ली कम far quicker than you expected it to come, right? Very quicker. Do you know this asana or was it just a guess? It was a guess between B and C. कल नो बात. सर बहुत बढ़िया, आपने करेक्ट वाला चूज किया. You don't even have to do a tiebreaker with somebody else. You were the only one who got this correct answer. So, well, what are we waiting for? Let's take you to be the next challenger on You versus YouTube. 10 क्रिएटर्स हैं हमारे पास, 10 सवाल हैं उनके पास, 1 क्वेश्चन इन ईच कैटेगरी और 10 लाख रुपए हैं मेरे पास आपको देने के लिए प्रणीत. पर दूंगा थोड़ी ना, कमाने पड़ेंगे, कमाएंगे. 10 सवाल आपके 3 टीयर्स में आएंगे. सिल्वर टीयर में होंगे 5 सवाल, उसके बाद थोड़े और मुश्किल गोल्ड टीयर में 3 सवाल, और फिर आपने देख ही लिया है कि डायमंड टीयर की डिफिकल्टी लेवल क्या होगी. You will start with 1,000 rupees. That's where you start right now.
and you can go all the way to 10,24,000 rupees. इस रास्ते में आपकी मदद करने के लिए 3 assists आपके पास available हैं. Ask, play a pool, share a clue, and change the question. Do you have any favorite topic that you want to see in the silver tier? Actually, you should want to see the difficult topic over here, so the favorite topic is saved for diamond tier. बहुत confusion है इधर. बहुत confusion है भाई. I think I want to see health and wellness in silver क्योंकि I don't want to go that way again. easy question. निधि, डरता लड़का आपसे डरता है. खौफ. दहशत मचा रखी है आपने यहाँ पे शो पे. ट्रेनर वाली बात हो गई, यू नो हाउ पीपल आर स्कैर्ड ऑफ देयर ट्रेनर्स के यार पुशअप करने को बोल देंगी, तो अब वही बात हो गई मेरे लिए कि योगासना ना पूछ ले भाई, जल्दी जल्दी बताओ. ओके, तो आइए आपका परिचय कराते हैं आपके सिल्वर टियर से. We have Roshni with science, Ganesh with math, Reena with sport, Nidhi with health, and Gaurav Garg with general knowledge. सबसे पहले आपको चुनना है 2,000 रुपए का सवाल, which is question number 1. तो बताइए कौन पूछेगा आपसे? I think I will choose math. सबसे पहले math. सबसे पहले math. Ganesh, you're first up to the plate, my friend. Come on, let's get this party started. Hi Pranit, how are you? Hi Ganesh, I'm doing good. Why? I'm just curious. Why did you choose math? Is it because you think it's difficult, or is it because it's too easy? Because he hates it. I've liked math. नहीं, math का उल्टा कैसा थोड़ा. Math had been my favorite. अभी तक भी थोड़ा है. अब अगर आप अच्छा क्वेश्चन दे दोगे तो it will become my most favorite. वरना maybe. Done. So if you answer this question correctly, you will have to say it out aloud. Okay, कि maths is my favorite subject. Okay, deal. Pakka. Deal. Do you like cheese, by the way? Yes. काफी. All right. Okay, I know this was a very random question, but थोड़ा बहुत related है. When I feel hungry, right? काफी बार मैं फ्रिज से जाके चीज क्यूब्स ऐसे ही खा लेता हूँ, just like that यार. So बहुत क्विक एंड टेस्टी फिक्स है वो. एंड वही क्यूब से मुझे एक मैथ का क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ, which I'm going to ask you now. So मेरा सवाल आपसे ये है, the cube of what whole number lies between 100 and 200? Option A is 4, option B is 5, option C is 6, and option D is 7. 4, 5, 6, 7. I will go with B5. B5? Is that your answer? उसको Yes. ग्रे कर दे? हाँ, कर दो ग्रे. पक्का. गणेश, ये तो बहुत ही, so this is like a piece of cake, it's a piece of cheese, this question. All right, so I'm very happy because this is the right answer, and now, as you promised, you have to say your line. Congratulations. Math is my favorite subject. Nothing else. Yes. Thank you. This is Ganesh converting people one by one, slowly. बूंद से बनता सागर. बहुत बढ़िया. 4 का is 64. 4 का cube is 64. Yes. That's 6 right. का cube is 216. and 7 And का 7 ka is 343. 343. and 23 का. Yes. Give me a few seconds. and 42 का. Give and me a few 1000 minutes. का. 1000 का 1 भी. billion. One with 9 zeros. Right? Yes. One with 1 9 billion zeros. is 9. Yes. 1 billion. That's 1 billion. 1 billion करोड़ में कितना होता है भाई? हम एक बार देसी लोग हैं, मैं करोड़ों में बताऊं. करोड़ में कितना 100 होता है? crore. 100 करोड़. 100 करोड़. चलो फिर अगला सवाल आपसे. प्रणीत, हम 100 करोड़ का पूछ लें? I am ready. अगर आप ready हो तो.
पक्का मैं रेडी हूँ, पर इसमें कैच ये है कि अगर आप जीत गए तो आपको 100 करोड़ मिलेंगे, अब हार गए तो आपको देने पड़ेंगे मुझे। 4000 वाला क्वेश्चन कर लो। ठीक है, वही करते हैं। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 2 for 4000, you tell us who will ask you this question. I will take GK. No, you can't take me anywhere. Why will you take me? Stop it. Sorry. You don't even have 100 crores. For 4,000, you can't take me anywhere. Okay? Okay, Gaurav Garg with general knowledge. That's what he means. GG with GK. So over to you, GG. Pranit, do you enjoy GK? I wouldn't say I enjoy, but I try to follow. You try to follow. The thing with GK is that there are no boundaries. You know, they say that anything under the sun is GK. And a lot of people therefore find it intimidating. But I'll keep it very simple since it's a silver tier and obviously we are playing for a good cause. So Gaurav, I want to tell you all those things. I don't know what you were saying because you said, what did you say? That GK is for everyone. You said GK is very intimidating. He said a third thing as well. ये कुछ गणेश ये गड़बड़ हो रहा है कुछ यहाँ पे. GK has no boundaries also, he said. मैंने बोला ना like GG बहुत silently सबको destroy कर देता है. So I think you are on his target I'm list his new target. for sure. I'm on his target. यार गौरव, क्वेश्चन पूछने से पहले एक यार कुछ सुना दो ना यार शक्ति कपूर का कुछ और प्लीज. गणेश बहुत अच्छा मैथ का तीतर है. This is very good. I like it. Oh, love it. We hope that Pranit loves this question as much. Thank you, Gaurav. You're such a sport. But Pranit is also hoping you wrote this question in a good mood. So here it is for 4,000 rupees. So Pranit, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था और आजकल भी आप देखते हो वी रन मेक इन इंडिया कैंपेन. सो इस मूवमेंट में इंडियन मेड गुड्स को प्रमोट किया जाता है. सो मेरा सवाल आपसे उसी से रिलेटेड है. विच एनिमल फीचर्स in the logo of Make in India? And your options are A, elephant, B, tiger, C, lion, or D, deer. Elephant, tiger. I will go with C, lion. ग्रे कर दें इसको? हाँ, इसको ग्रे कर दो. पक्का. Done. Lion. Sea lion. बताइए क्या ये सही जवाब है गौरव? So Pranit, yes, this is the right answer. Lion is absolutely correct. Very well done. Pranit, the focus is on Make in India. एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जहां हम कंपनीज को इंडिया में मैन्युफैक्चर और डिजाइन करने के लिए एनकरेज करते हैं. और इसका जो लोगो है, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू मेक इंडिया डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब. एंड इसके लोगो में एक लाइन मौजूद है. सो या इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी वेल डन. Excellent, बहुत बढ़िया. So you have now won 4,000 rupees. You've cleared question number 2. Praneet, question number 3 है आपका 8,000 रुपए के लिए. बताइए कौन पूछेगा आपसे ये? I will go with sports. Reena with sports. जैसा कि हमारे पंजाब में कहते हैं sports. All right. आपने sports चुना है. Do you like any specific sport? I like badminton. I play badminton casually. Okay, Praneet. So you said badminton is your favorite sport, but badminton has its own terms. However, the question that I'm about to ask you is not in badminton. It is relevant to some other sport. चलो आपके sporting terminology की knowledge को test करते हैं और ये रहा आपका सवाल. Terms such as fault, volley, ace, and deuce are related to which of the following sports? You have 4 options. Option A, basketball. Option B, football. Option C, cricket. या option D, tennis. Fault, volley, ace, and deuce. Yeah, I will
I think I will gray option D, tennis. Tennis is what you're choosing. You're sure about that? हाँ, sure. Okay. तो D, tennis को ग्रे किया जाए. And Reena, is that the correct answer? He's very sure about it, and I can't do the poker face like Gaurav. So that's the right answer. Congratulations to you. You've gotten it. You're moving on to the next question as well. Excellent. So that was Reena with the sports question, which Praneeth has answered correctly. तो उनको मिल गए 8,000 रुपए. 3 सवालों के जवाब दे दिए हैं. 2 बाकी हैं अभी सिल्वर टियर में. अगला वाला है 16,000 के लिए. बताइए कौन पूछेगा आपसे? Science. Science. 3 सवाल के सही जवाब आप दे चुके हैं काफी कॉन्फिडेंटली, एंड दिस इज योर 4th क्वेश्चन ऑन साइंस. मेरे ख्याल से आप साइंस एंथुसियास्ट तो होंगे. यू हैव डन योर बीटेक एंड देन एमटेक, राइट? सो यू आर डूइंग योर एमटेक, राइट? ओके. तो साइंस का कौन सा स्ट्रीम आपको हमेशा पसंद रहा है, एज इन व्हिच हैज बीन योर फेवरेट स्ट्रीम इन साइंस? In science, it was physics. ओके, कूल. सो आई थिंक आपकी ये जो फिजिक्स के प्रति इंटरेस्ट है, फिजिक्स से जो प्यार है, वो आपको इस क्वेश्चन में काम आए. सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट द रिमोट कंट्रोल्स. सो रिमोट कंट्रोल्स आर आवर वे ऑफ लाइफ नाउ. चाहे हम टॉय कार्स की बात करें, या हम टेलीविजन की बात करें, या हम एसी की बात करें, हर जगह हम रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं. तो मेरा सवाल आपसे ये है, most remote controls use what type of electromagnetic waves to operate a television set? Your options are option A, radio waves, option B, ultrasonic waves, option C, infrared waves, and option D, microwaves. It is not ultrasonic, not microwaves. Radio, infrared. I think I will gray C, infrared waves. C, red को, infrared को करें ग्रे. That's your choice. That's your final answer. उसको select करते हैं और रोशनी मैम से पूछते हैं if that is the right answer. So Praneeth, confusion किस बात की हो रही थी? I saw that you were kind of confused between radio waves and infrared waves, right? तो क्या चल रहा था दिमाग में? And why did you finally choose infrared? I was actually thinking कि radio waves, मतलब radio wave I was not totally sure if I could neglect, but फिर I thought कि जैसे radio waves की uses are more कि distance detect कर ले, या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कुछ सेंस करे, उस टाइप की चीज. इट्स नॉट कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन एग्जैक्टली. हाँ, तो अब फिजिक्स इतना पसंद था, इतना कुछ आपने एनालाइज कर ही लिया था, तो आंसर भी बिल्कुल सही है, एंड दैट्स द राइट आंसर. Praneeth, congratulations. That is the right answer. आपने जीत लिए हैं 16,000 रुपए. Congratulations. और रोशनी मैम हमें बताएंगी कि अगर हम टीवी रिमोट को माइक्रोवेव में डाल दें तो क्या होगा? So a bit of information on infrared waves as well as microwaves. तो infrared waves जो है, इन्हें हम almost रोज encounter करते हैं, पर उन्हें हम देख नहीं सकते because वो हमारे visible range के अंदर fall नहीं करता है. In fact, an interesting thing जहाँ से ये नाम आता है infrared, तो जो हमारा visible range होता है that is from 400 to 700 nanometer वाली wavelength. तो अगर हम देखें उसका एक end violet तो दूसरा end red, that is Vibgyor, right? तो so red के जो नीचे वाले रीजन में होता है, दैट्स इंफ्रारेड. सो दैट्स वेयर वी गेट दिस नेम इंफ्रारेड. हम इसे हीट की तरह महसूस करते हैं और ये इनकी खास बात होती है. इनफैक्ट इनिशियली ओवन्स में माइक्रोवेव नहीं बल्कि इंफ्रारेड यूज किया जाता था, लेकिन क्योंकि ये हवा को भी हीट कर देते थे, इस वजह से वो इतने पॉपुलर नहीं हुए, एंड ऑलमोस्ट वी काइंड ऑफ स्विच्ड टू माइक्रोवेव्स for our microwave ovens, right? And you'll also be amazed to know that almost half of the energy which reaches the earth from the sun comes in the form of infrared light, and that's why we feel the heat from the sunlight. Yeah, so that's infrared waves is the right answer.
And most importantly, never put your TV remote in a microwave. Right? Never. Listen, don't listen. Never listen. Never do what I say. Do not try this at home. But of course, 32,000 rupees is what is available for Praneeth now, but that can only happen after he answers question number 5. I must tell all our creators something very exciting about Praneeth. I found it very interesting that you actually represented all of Asia at the SpaceX competition in LA, in Los Angeles. Yeah. Tell us Yes. about that. क्या किया था आपने? रॉकेट बनाया था क्या? रॉकेट